Assalamu alaikum. This is Mrs. Talat Khusnood. Students, we have started presentation skills and yesterday we have discussed strategies for effective presentation on verbal level, and today we are going to talk about non-verbal levels. In face-to-face communication, the message is conveyed on two levels simultaneously, verbal and non-verbal. We have discussed it already, and today we are here to discuss about the non-verbal factors in presentation. Students, there are 5 topics that we will discuss today: posture, movement, gestures or kinesics, facial expressions and appearance. I think you are aware of all these to some extent, and today we will discuss these one by one in our oral presentations or in our face-to-face presentations. The first one is posture. What is posture or what is meant by posture? It is outward appearance that mirrors the inner mood, obviously. It includes the way to stand or sit. Posture generally refers to the way we hold ourselves when we stand, sit or walk. The way you sit, stand or walk reveals a lot about you. New speakers are unsure of what to do with their body. जब एक प्रेजेंटर जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा होता है, अगर वो नया है तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डू अबाउट हिज बॉडी, व्हाट टू डू अबाउट हिज बॉडी, कि वो बोलते हुए अपनी बॉडी को क्या करे, मीन्स के कहाँ पे वो उसको मूविंग पोजीशन में रखे या स्टैंड करे या स्टिल करे. तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका पॉस्चर जो है वो आपके इनर को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है. सर्टन मैनरिज्म्स creep in usually from nervousness. For example, some people pace constantly, bobbing the shoulders, fidgeting with their notes, jingling coins, either constantly moving or remaining static. ये कुछ ऐसी नर्वस हैबिट्स हैं या कुछ ऐसी नर्वस मूवमेंट्स हैं कि बॉडी की प्रेजेंट करते हुए ऑरली अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए कि बाज़ लोग जो होते हैं वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं, बाज़ जो हैं अपने कंधों को खामखा उचकाते हैं, या फिर आपके हाथ में जो भी कोई चीज़ है उसके साथ फिजिट करते रहते हैं, उससे खेलते रहते हैं. बाज़ लोगों को हाथ में कॉइन्स पकड़ के चमकाने की आदत होती है. तो इसी तरह से या तो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टिल कर लेंगे या फिर उसको बिल्कुल मूविंग पोजीशन में रखेंगे. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हाउ टू होल्ड योर बॉडी while speaking. That is called posture. Truly, obviously, what one speaks is very important, but what you do just before you begin and after you have finished is equally important. कि आपका बोलना आपके प्रेजेंटेशन में की है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन जो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते. सेकेंड वन इज़ मूवमेंट. Lecterns are slight, controlled movements from one edge to the other edge. Movements on lecterns while speaking is observed to hold attention of the audience in large sessions, or to get rid of nervousness, to suggest change in topic and to increase emphasis. Lecterns means dies or the thing where the presenter is standing with, कि कोई आपके सामने डाइस है, कोई और चीज़ पड़ी हुई है जिसके ऊपर खड़े होकर आपने बोलना है. तो बाज़ लोग जो हैं वो उन लेक्टर्न्स को अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं. So it shows your inner nervousness. So that is very much important, that what sort of movements you are doing when you are standing for speaking or oral presentations. So these movements show many things about you or your presentations. The next is gestures or kinesics.
The other name that is given to the gestures is also called kinesics. Kinesics is about the body movements. It is about the how your body's movement, how your body speaks. Physical movements, for example, nodding your head, blinking your eyes, shrugging shoulders, waving the hands, and other such physical activities are all from the forms of communication. आपकी ज़ुबान ही सिर्फ कुछ नहीं कह रही होती, बल्कि आपके हाथों के इशारे, आपकी आंखें, आपकी फिज़िकल मूवमेंट्स, वो सारा कुछ बता रही होती हैं कि आप असल में आप क्या हैं, what you are inside. So these are all called kinesics. It is the movements of head, arms, shoulders and hands. Gestures are used to replace words. Obviously बाज़ दफ़ा आप वर्ड की जगह जेस्चर्स यूज़ करते हैं, आप वर्ड नहीं बोलते लेकिन जेस्चर्स दे देते हैं और अगला इंसान जो है वो उसको समझ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल waving your arms to say goodbye. And skillful and clever gestures add to the impact of your speech. Gestures clarify your ideas or reinforce them and should be well suited to the audience and occasion. और ये भी बड़ी important बात है कि आपके gestures जो हैं वो आपकी audience के according होने चाहिए, कि कौन कौन से gestures जो हैं वो किस किस्म की audience के सामने आप उनको express कर सकते हैं, और आपके occasion से भी उनको match करना चाहिए कि what is the occasion of speaking. So it has been observed that there are as many as 700,000 varied hand gestures alone, and the meaning derived from them may vary from individual to individual. कि आप सिर्फ एक अगर हाथ के इशारों को देखें ना, तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि 7 लाख और 700,000 जेस्चर जो सिर्फ हाथों के इशारों से मुख्तलिफ जेस्चर्स किए जाते हैं, और पर्सन टू पर्सन उनके मीनिंग भी वेरी करते हैं. तो जेस्चर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जेस्चर्स शुड नॉट डिराइव द अटेंशन ऑफ द लिसनर एंड डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मैसेज. ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटर के लिए कि वो अपने हाथ के इशारों को लिमिटेड रखे. आपकी कही हुई बात उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऐसा ना हो कि सुनने वाला आपकी अब बात को सुनना छोड़ दे और आपके जेस्चर्स की तरफ मुतवज्जो हो जाए. तो स्पीकर्स gestures should be quite natural and spontaneous. The next of our point we are going to discuss, that is facial expression. Obviously your face is everything. Students, आप ये कह सकते हैं ना कि eyes are mirror of your heart, but the face is the mirror of your soul or your mind. So that is very much important. What you are saying or what you are expressing, it is matched with your facial expressions. आपके facial expressions भी उसके साथ साथ जा रहे हैं. Facial expressions also play an important role in presentation. The face is the most expressive part of the body. For example, smile stands for friendliness, a frown for discontent, raised eyebrows for disbelief, tightened jaw muscles for antagonism, hostility and opposition, etc. And positive facial expressions of speaker help him in better explanation of his topic. So the facial expressions are very much important. The face rarely sends a message, single message at a time. Instead, it sends a series of messages. Your facial expressions may show anxiety, recognition, hesitation, and pleasure in quick succession. Students, there is a very important example in this connection. आजकल आपने देखा ही होगा कि smileys जो हैं that are replacing the words. आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजिंग में जाएं तो आप देखते हैं कि देर आर अ लॉट ऑफ स्माइलीज देयर. बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है, और वो सारे फेशियल एक्सप्रेशंस ही हैं
that replace the words. So facial expressions are very much important in your presentation. And last but not the least is the personal appearance or the appearance. Appearance आप समझते हैं कि that is related to the personality of the speaker. Personal appearance plays an important role. People see you before they hear you. इससे पहले कि लोग आपको सुने वो आपको देखेंगे. As you adapt your language to an audience, you should also dress appropriately. आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. मीन्स के आपके उस ओकेजन की मुनासबत से होनी चाहिए वेयर यू आर. For example, if you are in your class and class presentations are going on, so when you will not be well dressed according to your uniform code, it will be the negative point on your side. तो जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. एज यू appearance includes clothes, hair, jewelry, cosmetics, and so on. But in today's society, the purpose of clothing has altered from just fulfilling the basic need to expressing oneself. आजकल ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड ड्रेस कोड्स आर देयर एंड एट डिफरेंट ओकेजन्स इन at formal occasions, dress codes are followed. So dressing is very much important, and it makes your physical appearance, and your physical appearance is very much important so far as your presentation is concerned. Clothes accent the body's movements. तो आपकी जो ड्रेसिंग है, आपकी अपीयरेंस है, आपकी ड्रेसिंग के अपीयरेंस के अंदर आपकी ड्रेसिंग के अलावा आपकी नीटनेस और सभी कुछ उसमें काउंट होता है. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बेटर ड्रेस shows the respect for the listener, and appearance should support the verbal message as well. So students, these are some non-verbal factors that are very much important while making your speech or making your presentation. So that's all for today, and I hope you are following these topics well. Students, you should make short notes about it, short questions about all these topics, and you will have to prepare it as a full length question as well, and short or brief questions, and short and brief questions. So that's all for today. Allah Hafiz.